लेकिन एक सेक्टर पे सबकी नज़र है, वो है रियल एस्टेट सेक्टर की। यहाँ से क्या उम्मीद कुछ की जा सकती है? और इसकी एक दिग्गज कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, उसकी मैनेजमेंट से बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। कंपनी के CEO MD पिरोशा गोदरेज हमारे साथ है और उनसे समझते हैं कि इस पूरे ही सेक्टर में आखिरकार बज़ क्या है और इसमें आगे की उम्मीदें क्या की जा सकती है। पिरोशा, शुक्रिया जी बिज़नेस के साथ जुड़ने के लिए और इस सेक्टर पर अपना व्यू रखने के लिए। सबसे एक अहम सवाल तो यही आता है कि आपका इंडिविजुअल कंपनीज के बाद बोल रहा हूँ, जो 770 करोड़ का आपका रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट है वो कितना अहमियत रखता है कंपनी के लिए, क्योंकि इस समय चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, दोनों में थोड़ा ठहराव सा आया हुआ है। We think it can be very important for us. This allows us to access a whole new set of opportunities while remaining very much consistent with our asset-light land sourcing strategy. So we're quite excited about this development. We think this further enables our ability to add new projects, add different types of projects, and very much within our target markets and in the residential space. So we think this can be a very substantial growth avenue for Godrej Properties. अभी आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कमर्शियल पे या फिर रेजिडेंशियल्स पे ज़्यादा फोकस है आपका? We're working on multiple new projects. We've just launched 2 new projects in the last couple of weeks, one each in Mumbai and in Pune. We have launches slated in the coming months in NCR, in Gurgaon, in Ahmedabad and Hyderabad and several other cities. So I think there's quite a robust portfolio of new launches expected for the company this year. And we're also looking at several opportunities that we think are quite exciting in terms of adding new projects to the portfolio. So on both of those fronts, we expect FY13 to see very good momentum. इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अगले 6 महीने में प्रॉपर्टी सेक्टर में मांग बढ़ेगी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स टोटली डिमांड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि डिमांड कितनी रहती है? I do think that demand will pick up over the next 6 months, but it really is largely a factor of how things move in the economy in general. I think we're quite optimistic that given the levels of concern and given now that the government understands the level of concern that there will be movement on the reform front, we think that can be a big trigger both for the economy as a whole as well as for the property sector. We think other things like interest rates coming down, which we also think is quite likely over the course of the year, can be additional triggers for the sector. So we're quite optimistic that things will pick up from here, but of course there is risk to that assessment. So if things in Europe, for example, continue to worsen, if the Indian reforms we're expecting do not take place, things could continue to be difficult for the property sector. But on balance, we think it's more likely than not that 6 months from now we'll be in a much stronger place than we are today. बिल्कुल। खैर, इस बीच देखिए काउंटर दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुका है और एक 4.5 रुपये की मजबूती के साथ डे हाई पे है। अच्छा वॉल्यूम भी इसमें देखने को मिल रहा है। भले ही डिमांड रियल एस्टेट में थोड़ी कम हो, लेकिन काउंटर में डिमांड जो है एक बड़ी है और अच्छी मजबूती के साथ अब चलता हुआ नजर आ रहा है। मिस्टर पिरोशा, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर दोनों में ही इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब है कि मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव बढ़ना और साथ ही इन्फ्लोस का थोड़ा कम आना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? You know, I think that's very much true, and again, it's a factor of economic sentiment not being very weak. Property is a very sentiment-driven sector, so when people are concerned about how the economy is doing and feel that real estate prices may come off, they prefer to postpone their decisions. But these kind of trends can also get reversed very quickly, and we must keep that in mind. We've seen a very recent example in 2009, where after a very, very weak period at the end of 2008 and early 2009, the market came back very quickly, both in volumes and pricing, once economic sentiment started to improve. We think something similar could happen this time around, so long as economic sentiment does indeed improve. चलिए, शुक्रिया पिरोशा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग सेगमेंट में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और आगे चल के फोकस कैसे है कंपनी का और इस पूरे ही सेक्टर में इस समय बस क्या है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रियल एस्टेट के अलावा एक और सेक्टर है जो इस समय काफ़ी लाइमलाइट में है और खबरों में है, वो है रिटेल सेक्टर। क्या रिटेल को लेकर सरकार